block of the Southern Railway. Tamil Nadu has received 2 high-speed rail projects. We have seen, however, other HSR projects have progressed. India's first HSR corridor between Mumbai and Ahmedabad has been delayed for a long time, with only one stretch set to be ready by 2027 and the entire project targeted for completion only by 2029. To conclude, the railways must focus on improving passenger services so that the service quality is ensured across trains for all passengers. At the same time, the union government must address the concern raised by Tamil Nadu and expedite pending railway projects, allocate adequate funds and release funds due to the state without delay. Thank you. माननीय सदस्य श्री डी प्रसाद राव जी। Respected Madam, I rise today to speak on the second batch of supplementary demands for grants for financial year 25-26. The total demand placed before this House is about 2.81 lakh crore, including 61 demand, which is significantly lower than 6.78 lakh crore in financial year 2024 and 25. This reduction clearly reflects better estimation, improved fiscal discipline, and stronger financial planning by our government. Under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji, the NDA government has displayed this fiscal foresight. The story of this progress can be seen in our growth indicators. Rural stress has declined significantly in 2025, coming down to 0.8% in December 2025 as compared to 7% in January 2023. Agriculture is boosting the economy with an average annual growth rate of agriculture and allied sectors of around 4.4%. The horticulture sector is emerging as a key driver of growth, contributing around 33% of agriculture gross value added. The developments clearly show that India is steadily progressing towards the vision of Viksit Bharat. Madam, the supplementary demands for grants also highlight how the government is prioritizing key sectors to support this vision. Madam, important demand raised in the SDFC is the provision of 19,000 crore as subsidy on fertilizers to support our farmers. At the time of global uncertainties and rising input costs, such support will significantly improve farmer welfare and help meet their agriculture needs. I would also like to draw the attention of the House to another pressing issue affecting farmers in my constituency of Chittoor. Mango farmers in the region are currently receiving non-remunerative prices for their produce, resulting in considerable losses. To address this problem, I request the government to consider establishing a mango board similar to the board set up for commercial crops such as rubber, tobacco, and coconut. Such a board would enable farmers to better manage production, marketing, and price stabilization while ensuring they receive fair and remunerative prices. This has been a long-standing demand for the last 2 years, and considering the current export uncertainties due to global conflicts, this would be the right time for the government to take this step to protect the mango farmers of Andhra Pradesh. Under the Ministry of Defence, an additional 26,236 crore has been sought for defence services. This investment is reflected in the strong performance of our defence sector. India's defence production reached a record of 1.51 lakh crore in financial year 2024-25, registering 18% growth over the previous year's output of 1.27 lakh crore. This demonstrates the success of the government's efforts to strengthen indigenous defence manufacturing. In this context, the government of Andhra Pradesh has identified 5 defence manufacturing hubs covering areas such as missiles, ammunition, aircraft components, airspace, defence electronics. To further support this initiative, I would like to request the Government of India to consider establishing a defence industrial corridor in Andhra Pradesh. Such a step would greatly strengthen indigenous defence production and create employment opportunity in the region. Further,
Tirupati has been proposed as a research and development hub under this initiative. Therefore, I would like to request the government to establish a DRDO industry Academia Center of Excellence in Tirupati, which would promote innovation, collaboration between research institutions and industry. Madam, under the Ministry of Road and Transport and Highways, an additional 17,647 crore has been sought for the investment in the National Highways Authority of India and for the creation of infrastructure assets. This government has displayed a strong commitment to enhance multinodal connectivity in India to boost economic activity. Through initiatives such as PM Gati Shakti National Master Plan, it has supported 201 projects, out of which 167 projects are currently under implementation. Additionally, road connectivity has been taken to new heights under this government. Over the past decade, India's national highway network has expanded from 91,287 kilometers in 2014 to 1,46,145 kilometers in 2024, represent a 60% increase. This expansion has significantly improved connectivity, logistic efficiency, and regional development. In Andhra Pradesh, our Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu Garu has recognized the importance of roads as lifelines of our country. He has formulated an action plan to improve nearly 15,000 kilometers of roads across the state. Our Chief Minister is also working on rebuilding the infrastructure of our capital city of Amravati and has approved 9,000 crore infrastructure expansion plan. In this context, I would like to thank the central government for approving the outer ring road for Amravati. To further facilitate ease of travel and transport, I would request the government to approve the 2 proposed greenfield spurt roads as part of the overall project. Madam, under the leadership of our Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, Andhra Pradesh is progressing towards realizing the vision of Swarnandhra. In this context, I hope that our demands are considered so that our state, along with the nation, can be path to be the 3rd largest economy in the world. With these words, I support supplementary demands for grants and... Madam, thanks, Honorable Speaker. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री अनिल देसाई जी। 5 minutes, 8 minutes. Thank you, Chairperson. Thank you, Chairperson, Madam. Today we are discussing and debating over supplementary demands for grants, financial year 26. It's a second batch, which is comprising of 2.81 lakh crore, out of which 2.01 lakh crore is the net outgo, and 81,000 crores will be out of the ministry's own savings and recoveries. It's a huge outlay as far as this is concerned, and specific provisions which have been made that goes to mainly on fertilizer subsidies. These are subsidies on fertilizer. This has been enhanced, or this has been provided for, because the tensions which have escalated because of Israel-Iran war, that is also known to the people of India. Government's measures ought to have come, and that is what is in supplementary demands. Similarly, food subsidies, 23,641, that is under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, that has been done. Madam, in these provisions which have been made, the major observation of mine is that uncertainty in budget estimates, because when we go for supplementary grants, supplementary demands, it is some kind of accuracy need to be there. Here, the deficiency of accuracy can be felt because the varying amounts and the proportion in which the budget estimates were done and revised estimates from time to time have been taken by the different ministries, that differs. And that is how this inaccuracy in the budget itself, I would urge Finance Minister to see that the entire portfolio
is managed in such a way that we need not run around or we need not run from pillar to post in times of emergency. That is what can be seen. Now, uncertainty in budget estimates itself indicate that a lot of economic planning doesn't come through. Lack of social sector spending, if you go by that, healthcare, education, that these are the areas where you should have allocated a fair amount, which was not at the time of when the budget was taken up, and now that we are running for it. Significant schemes, social schemes have been, the provisions have also been cut. That is also a major concern. Increased defense spending, which has been seen, more than 41,000 crores have been taken up in the supplementary supplementary demands for grants. Now this indicates that even more than 7 lakh crore, the provision which was made for defense. I mean, and time and again we have been going for the supplementary grants. That shows that how are we planning our defense strategy. Now, in case, I mean, where the foreign policy is concerned, we need to be very careful, because the way things have happened, that our border nations, they are also not supporting us. And in time of such a drastic situation, what would be our step? Defense is necessary, defense provisions are necessary, acceleration in that is necessary, but kind of mismatch is there that need to be taken care of. Now, in this economic stabilization fund, that is a contingency fund, basically used by the government to stabilize the economy during times of crisis. Of course, this is a time of crisis. Now, this time of crisis, how much has been allocated, how much has been provided for, and what kind of contingency and emergency is right in front of us. Now, kind of LPG shortage. This is not that everyone is coming out here and trying to show, or just, I mean, resonating what is happening or felt by the people of India at large. Now, how will we cover it up? Now, even for fertilizers also, the maximum this thing is our dependence on the energy. Why the energy security has been completely, or I won't say that totally neglected, but why, I mean, that provision which should have been there right from the beginning, what has happened? The 2014, when the new regime has come of NDA, at that point of time, the per barrel was $40, and that has drastically come down. And that point of time, the ministry of maybe petroleum minister or even from the government, this promise was done to the people of India that whatever is coming by way of saving, this will be used for Indian economy in times of crisis. Now this is the situation when we find the crisis and where the money has gone. Now that we are harping or we are crying over that it rose to 119 dollars per barrel. Now it is 90 today. So if this kind of situation is there, where that money which has been completely accumulated for over 10, 12 years, where it is gone, now this is the time that it should come into in the market. It should be used for the welfare of the country. Now ESF, now how would you provide that? What is the effect of ESF to the common man? Now providing liquidity to the market. Now, is it there? Now, already inflation is on the rise. See, all the NSO-like agencies or whatever agencies they used to come out with their reports, they are all suppressed for reasons known to the government. Otherwise, these reports should be there. And what is happening on the ground, felt by the common man, is not felt by the people who are there sitting in the treasury benches. They are coming out with big promises. They are showing India at 2047. We are in 2026, dying, gasping for our breath. And this is the situation what it is felt by the people, common people of India. So this, when Nishikant Dubey was pointing out that you should speak on supplementary grants, now I'm asking the finance minister that economic stabilization fund, what is the provision made under it and how it will be implemented and what will be the role of a common man in that, how you will raise whatever the problems of people that are coming up in urban areas, in rural areas. We have
instead of getting that what we call demographic dividend, we are going in a huge debt. The country is going, the states are going, because revenue is not there. Even for the budget provisions, whatever are there, that revenue will be raised by direct or indirect sources, that is not coming true. We are going every year, we are going for debt. And how that debt will be paid? What is the debt on the common person? Out of 140 billion people of India, what is the debt on here? I'll take 1 or 2 minutes. Another point is gold reserve fund. Now, gold reserve fund is a part of RBI, foreign exchange. And when it is being, the provision is being made, I mean, that should have been made, there is no doubt about it. But then, what is the relation? For a common man, it should come out in a simple way. Supplementary grants, you come out with a paper, your provisions are there, everything is there, but people who have the total middle class or low middle class or poor people of India. Today, what is the situation in India? That 10% of the top people, they are holding more than 60% of the wealth of India. 90% of the people, 90% of the Indians, they are dying with only 5 to 7% of the wealth, where the wealth is negligible. 9% of the labor force of India is just organized, and more than 93%, they are unorganized, without any social security, without any help or without any assurances from the government. 80 crores people are being fed free food. They are under food security scheme. And DBT transfers, which was really bragged by the treasury benches, that once upon a time in UPA government, when direct benefit transfers were there, 1 rupee if you spend for the people, 85 paisa used to go with the intermediaries and 15 paisa used to reach the needy. Now, in Rajasthan, if you go by, in the last month only, all the reports were there, that Rajasthan had shown that DBT also has a lot of leakages. And these leakages are playing the people who are with the politicians, people who are there with the government, they are filling their pockets and they are making money, and the needies are without food. So if this be the situation, then whatever provisions we make, whatever budget revisions we make, what is the use of it? I would urge the finance minister to see that all these loopholes are plugged, and really people, that budget really works, supplementary grants really work for the people of India, and Indian economy comes up, people of India. And then we can say that India is on the way to माननीय सदस्य श्रीमती सुप्रिया सूले जी. Madam, I speak on behalf of the NCP-SP on demands for grants. सर, शुरुआत में ही में हमारे सबके गुरु श्री यशवंतराव चौहान जी की आज जयंती है. मैं बड़ी विनम्रता से उनको आदरांजलि और श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ. और उसका कॉन्टेक्स्ट भी ऐसा है कि आज उनकी जयंती 114वीं, और वो इस देश के अर्थ मंत्री रहे, और 71 साल से 75 साल तक 1971 टू 1975 उन्होंने एक इंटरिम बजट, एक फाइनल बजट और 3 फुल फ्लेज बजट्स. महाराष्ट्र के बड़े वरिष्ठ नेता थे, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और आज उनकी जयंती है. तो मेरे ख्याल से हम सब के लिए वो एक गुरुवर्य रहे. तो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि उनकी जयंती पर आज ये फाइनेंस का डिस्कशन हो रहा है. ये मैं सोच रही थी कि जगदम्बिका जयपाल जी का बड़े विस्तार से मैंने भाषण सुना. उन्होंने जो चीज़ें आज सरकार में कही है कि इंटरिम बजट और डिमांड फॉर ग्रांट्स हर सरकार लाती है, हमारी सरकार लाती थी. इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग अबाउट इट. बट आज देश में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, और जब कोई हमारी महिला LPG के बारे में बात कर रही थी या आंदोलन कर रही थी, तो एक कैबिनेट मिनिस्टर जी खड़े रहे और उन्होंने कहा कि ये वक्त देश को 7 और 1 आने का है. मैं प्रस्ताव देना चाहती हूँ, जिसके बारे में पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, कि द वर्ल्ड इज़ इन अ ग्लोबल क्राइसिस, एंड व्हेन द पहलगाम अटैक हैपेंड, दिस वाज द सेम ऑपोजिशन which stood with the Modi government in support of the larger interest of the nation. या कन्नी मोई जी बैठी है, बहुत सारे मेरे सांसद हैं जिन्होंने भारत की तरफ से हम प्रदेश गए और भारत की तरफ से हमारी जो मांगे हैं वो दुनिया में बताई. I think time has come, and I take this opportunity, even if it doesn't fall in the gambit of this grants, but I want to say, because it's a crisis. The world is at a crisis and India is soon going to be in a crisis. Please
call urgently an all-party meeting. हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे, देश के हित के लिए रहेंगे, but please call for an all-party meeting. Let's debate the war. We are happy to work in the larger interest because it's impacting each one of us who's sitting here. हर एक के क्षेत्र में कुछ, मैं 4 उदाहरण मेरे क्षेत्र के सर देते हूँ. खट्टर साहब यहाँ बैठे, आपके यहाँ भी ये होता होगा. सर मैं शुरुआत कर रही हूँ, हमारी अम्बाबाई है कोल्हापुर की, हम सब के लिए हमारी ये देवी है, और अम्बाबाई देवी का जो प्रसाद होता है वो 5,000 लोगों का रोज होता है. खट्टर साहब आज उसको 2,000 लोगों को ही खाना खिला पा रहे क्योंकि गैस का इशू हो गया है, और ये हमारी अम्बाबाई के नहीं सब जगह हो रहा है. तो मंदिरों में प्रॉब्लम्स होने लगा है. उसके बाद जलगांव में हमारी बहन है यहाँ जो जलगांव की सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, उनसे भी सुबह बात हो रही थी. उनके यहाँ बहुत अच्छे गहने मिलते हैं, बहुत सारे इम्पोर्ट प्रदेश में जाते हैं. वो हर जो वहाँ गहने बनाता है वहाँ पूरा काम अब बंद हो चुका है क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं है. उसके बाद MSME, पूरा MSME जहाँ से मैं आती हूँ, हमारे पूना डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे MSEs है, आज 75% बंद पड़े. बजाज ऑटो की जैसी कंपनी लो आप, मर्सिडीज बेंज, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ आई है पूना डिस्ट्रिक्ट में, वो सारी 70% MSMEs बंद है क्योंकि गैस का क्राइसिस चल रहा है. उसके बाद रेस्टोरेंट्स, बेंगलोर हो, कन्नीमोई जी, सुमति जी चेन्नई से आती है, उनको पूछ लीजिए, मुंबई हो, पूना हो, जहाँ भी हो, क्या रेस्टोरेंट्स है. ये रेस्टोरेंट्स का सवाल नहीं है, लेकिन ये लाइवलीहुड्स है. तो आज LPG के बारे में अनिल देसाई जी ने भी कहा, आज LPG के बारे में हमें अपेक्षा थी कि एक स्टेटमेंट आए सरकार से. हम आपके साथ हैं, हम समझ जा रहे हैं कि आपके जो चैलेंजेस है उसमें साथ में खड़े रहेंगे, लेकिन LPG का आज जो इश्यू है, क्या प्राइस है LPG का. मुझे आज भी याद है कि मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बन के आए थे तब उनका एक सपना था कि हर महिला के घर में अगर जाएंगे उसको खांसी ना हो, उसको LPG सस्ते में मिले. लेकिन आज क्या परिस्थिति है मैडम. और इसके लिए जगदम्बिका पाल जी कह रहे थे कि भारत के लिए स्पेशल कुछ हो रहा है. मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ नया हो रहा है, क्योंकि जगदम्बिका पाल जी हमारे लिए आज आपके क्षेत्र में, आप तो मुंबई भी काफ़ी आते हैं तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार भी वहाँ हैं. आज मुंबई में सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट और पैनिक, लोग डरे हुए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है LPG मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो एक तो प्राइस भी बढ़ा दिया, वेटिंग टाइम भी बढ़ा दिया, और लोगों को पता नहीं कि 15-20 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा कि नहीं. ऐसी परिस्थिति, लोगों का डर है. मैं किसी को डराना ही नहीं चाहती, ना यहाँ विपक्ष में हूँ तो देश में किसी को डराना चाहती हूँ. हम सब पार्लियामेंट में देश को आधार देने के लिए है कि कुछ नहीं, सब ठीक होगा, लेकिन होने के लिए सरकार क्या कर रही है ये मैं पूछना चाहती हूँ. ये डिमांड का ग्रांट्स में बहुत सारी उन्होंने पूछेगी. एक नया आज ट्रम्प साहब ने एक नया ट्वीट किया आज, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार को, आज ही एक ट्रेड इन्वेस्टिगेशन है, मुझे पता है कि इन्वेस्टिगेशन ही है, लेकिन एक ट्रेड इन्वेस्टिगेशन आए S301 ऑफ ट्रेड एक्ट. कैन द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर क्लैरिफाई टू दिस नेशन दैट विद दिस न्यू ट्रेड एक्ट विच इज S301, which the Honorable President of America has tweeted about, what is the impact that's going to have on our economy, and with this new numbers that this government has come with, will you be able to manage the growth story of India which you are claiming with so much, such a mess the world is in. It's going to impact trade, it's going to impact our livelihoods. How, what is the contingency plan? आप जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे कि एक बड़ा contingency plan है. It's a 1 lakh crore amount is what you said. 1 लाख करोड़ में क्या हो रहा है? MSMEs का 8 लाख करोड़ रुपया सरकार ने दिया है. जल जीवन मिशन का पैसा इस सरकार ने नहीं दिया है. तो when there is, ये तो नॉर्मल स्कीम्स का है. और आपने यूरिया का बोला था, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार को, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में सारों ने बोला, फर्टिलाइजर सब्सिडी, there is even a drop in domestic production. I want to ask this government in demand for grants, ये जो आप यूरिया की सब्सिडी के बारे में बोल रहे हैं, there was a green ammonia project which was to stop imports. We are completely dependent on imports for all this. So imports के बारे में आप जब एक, इसी सरकार ने एक बजट में अनाउंस किया था कि ग्रीन अमोनिया रिप्लेस करेगा इंपोर्टेड अमोनिया. This government for 1 year has done nothing for green ammonia. पॉलिसी आगे बढ़ी ही नहीं है. Why do we have to wait for a crisis to happen to relook at policies? Then what is the value of a budget if you are going to announce schemes and nothing is going to come out of the schemes? ताली मारने के लिए अच्छा सुनने के ग्रीन अमोनिया फर्टिलाइजर लाएंगे, इनका नैनो का, what is the outcome of nano? Can somebody tell me, madam?
नैनो फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट बहुत, मैं तो कान पक गए सुन के मेरे. What is the outcome? What is the data? And what is the success story of nano fertilizer? Can somebody tell me? In academic interest, it's an experiment and experiments fail. Nothing wrong. Everybody जो कोशिश करता है कभी ना कभी successful होता है, कभी fail होता है. But what is this government's intervention on it? Defense. The whole world knows what our neighborhood. Anil Desai ji abhi defense के बारे में बोले. We are not against. Our safety and security of our citizens is the basic right that we have given to them. Did you not know this in the budget? How volatile the world is right now. That you have to keep re-looking at your defense budget. What is the government's plan? I want to ask them. The other question I want to ask Nirmala Sitharaman ji is there a war risk contingency budget that she has brought? Demand for grants साली हम समझ सकते हैं. स्कूल है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है. स्कूल्स के बारे में तो स्कूल्स के लिए पैसा नहीं है, लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज इस देश में आ रही है. Why are we welcoming so many foreign universities when we have wonderful universities in this country? I'm not against foreign. You can have exchange programs, but you cannot let Indian. एक तरफ आप बोल रहे हैं मेक इन इंडिया करो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं foreign universities आओ. Budget of education has gone down, and you are encouraging foreign universities for what? Same thing is applicable to education, to healthcare. Same thing with urea. We need a clarification. We need a clarification for defense. This government needs to tell us what it is. What is the plan of it? MSME. What is the government's plan for all this? Agriculture. बड़े आप खुश हो रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में. सबसे ज़्यादा मैं नहीं कह रही, हमारी सरकार में भी हुए थे. I'll round it up in 2 minutes. हमारी जब सरकार थी तब बड़ी विनम्रता से हमें एक भी आत्महत्या होती थी दुख होता था. जगदम्बिका पाल जी कहाँ गए? उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर में इतना उन्होंने पैसा दिया है दिख गए. सो उन बड़े सीरियस है, इसलिए मैं जान उन्होंने जो कहा. आज आपको आश्चर्य लगेगा मैडम, इन द बजट यू विल सी दैट देयर इज NHB पॉली हाउसेज, ये जो इंस्टीट्यूट है सरकार का जो पॉली हाउसेज का काम करता है, 40% उनकी सब्सिडी अभी नहीं मिल रही है. क्या एग्रीकल्चर डबलिंग ये कर रहे हैं? Where is the data to prove it? Cost of agriculture has escalated so much. How can you say this? I'll give you an example of MSMEs जिसके बारे में बजट में है. Madam, the delayed payment of MSME system is 8.1 lakh crore. 8 लाख करोड़ रुपया देना है सरकार को. Why is this not in the budget? Can somebody tell me? Same thing about fiscal discipline. Fiscal discipline कैसे मैनेज करेंगे इतने मैस में? Oil prices are going up. आप अभी तो कह रहे हैं नहीं बढ़ाएंगे, अच्छी बात है ना बढ़ाए, बट 15 दिन के बाद याद रखना प्लीज मैडम, ये सब और बढ़ने वाला है. So this government really needs to get all that, be it trade, be it price rise. I urge this government that demands for grants is something which is we always do during a budget session, but with this is not what is important. Right now the government needs to decide what it is doing with crude, with all our MEA, which is working overtime, but we need results. This war needs to stop. And livelihoods needs to come back. Otherwise, he used the word banana republic. The world is going to be a banana republic. So please, I urge this government to take this very seriously. Please, let's put all our political differences aside. The way we united during Operation Sindhu, I request this government, please call an all-party meeting and put our minds together in the larger interest of this nation and this world. And I think India needs to take the lead in it. Thank you. माननीय सदस्य श्री नरेश महास्के जी. मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगे के दूसरे बैच पर बोलने का यह महत्वपूर्ण अवसर दिया. महोदय, आज सदन के पटल पर जो अनुपूरक मांगे रखी गई है उनमें 61 अनुदान शामिल है और इसके माध्यम से 2,81,289.26 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च को अधिकृत करने के लिए संसद की स्वीकृति मांगी गई है. मैं अपनी पार्टी शिवसेना, हमारे आदरणीय नेता श्री एकनाथ जी शिंदे जी और हमारे संसदीय दल के नेता श्री श्रीकांत शिंदे जी की ओर से इस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ. अगर हम इन अनुदानों को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि यह पैसा हमारे किसानों, गरीबों और आम आदमी के भलाई के लिए खर्च होने वाला है. इस ग्रांट के माध्यम से किसानों को राहत देने के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी के तहत धनराशि का प्रावधान किया गया है. यह सीधा हमारे किसान भाइयों की लागत को कम करेगा और उन्हें फायदा पहुंचाएगा.
इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जा रही है। राज्य को आपदा से निपटने के लिए 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए 13,641 करोड़ रुपए और अनुसूचित जनजाति के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त खर्च तय किया गया है। यह आवंटन स्पष्ट करता है कि हमारी सरकार की नीतियां समाज के हर वर्ग को लाभान्वित कर रही है। महोदय, मैं महाराष्ट्र की उस पवित्र भूमि से आता हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि है। शिवाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि साधन भले ही कम हो, लेकिन अगर साधना और संकल्प बड़ा होता है तो विजय निश्चित होती है। महाराज की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध कथन है जो आज के इस नए और सशक्त भारत पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जेव्हा इरादे मजबूत असतात तेव्हा डोंगर देखील मातीच्या ढिगाऱ्यासारखा दिसतो। इसका अर्थ है जब इरादे और संकल्प मजबूत होते हैं तब पहाड़ भी मिट्टी की ढेर जैसा दिखाई देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और पूरे महाराष्ट्र का सम्मान करते हुए मोदी सरकार ने मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। यह केवल एक भाषा का सम्मान नहीं है, ये ज्ञानेश्वर माऊली और तुकाराम महाराज जैसी संत परंपरा और शूरवीरों की उस महान परंपरा का सम्मान है जिसने सदियों तक देश को दिशा दी है। इतना ही नहीं महोदय, यह पूरे महाराष्ट्र और भारत के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है कि यूनेस्को ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 ऐतिहासिक किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया है। 2014 से पहले इस देश के सामने चुनौतियों का बहुत बड़ा पहाड़ था। अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, हमारी सीमाएं असुरक्षित थी और सिस्टम से गरीबों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। लेकिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने अपने मजबूत इरादों से उन चुनौतियों का पहाड़ को मिट्टी के ढेर जैसे बदल दिया। इसी मजबूत इरादे का परिणाम है जो भारत कभी दुनिया से आर्थिक मदद मांगता था, आज वही विश्व की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह वही इरादा है जिसने भारत को G20 की सफल अध्यक्षता दिलाई और पूरी दुनिया ने भारत की असली सामर्थ्य देखा। महोदय, आज भारत विश्व गुरु बनने की तरफ तेज कदमों से बढ़ रहा है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। उन्हें देश की यह तरक्की और सच्चाई स्वीकार नहीं हो रही है। पिछले एक दशक में इस सरकार ने गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं। महोदय, 4 करोड़ घर का मतलब है केवल ईंट पत्थर की दीवारें नहीं है, इसका मतलब है 4 करोड़ परिवारों को इज्जत और सम्मान की जिंदगी देना। पिछले 21 साल में 32 लाख नए घरों को चाबियां गरीबों को सौंपी गई है। विपक्ष के लोग दशकों तक सिर्फ गरीबी हटाओ का खोखला नारा देते रहे, लेकिन हमारे सरकार ने गरीबों को पक्का घर देकर गरीबी को असल में मिटाने का काम किया है। जल जीवन मिशन में 5 वर्षों को दौरान 12.5 करोड़ नए घरों को पाइप से साफ पानी उपलब्ध किया है। उज्ज्वल योजना के माध्यम से आज तक 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान किया है। जो जहरीले धुआं और पहले हमारी माताओं और बहनों को फेफड़े में जाता तो धुआं, आज वह धुआं इस सरकार ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब यह वर्ल्ड वॉर की वजह से जो परिस्थिति निर्माण हुई है वो परिस्थिति 1980 में भी हुए थे, जब इराक और ईरान का युद्ध चल रहा था, तभी आपकी सरकार थी। जो प्रयास तभी आपने निकाला, उससे अच्छा प्रयास अब सरकार निकालने वाली है। महोदय, बिचौलियों को राज खत्म करते हुए पिछले 1 साल में सरकार ने DBT के माध्यम से 6.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों की बैंक खातों में पहुंचाई है। इसमें 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हमारे किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों से पिछले वर्ष भारत ने 350 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन किया है।
150 मिलियन टन उत्पादन के साथ आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। हम ब्लू इकोनॉमी में झंडे गाड़ रहे हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। हमारा किसान और हमारा मछुआरा भाई आज खुशहाल हो रहा है। यही तो असली सुराज है। अध्यक्ष महोदय, 2025 में भारत का कुल मेट्रो नेटवर्क वह 1000 किलोमीटर के ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर गया है। इसमें मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि मेरा अपना संसदीय क्षेत्र ठाणे भी इस विकास यात्रा में मजबूती से शामिल है। ठाणे और मुंबई के बीच में कनेक्टिविटी आज विश्व स्तरीय हो रही है। अब भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। इनलैंड वाटरवेज के मामले में भी पहले भारत केवल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, जो आज 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से आज एक सामान्य उपभोक्ता सिर्फ बिजली खर्चा करने वाला नहीं, बल्कि बिजली पैदा करने वाला उत्पादक बन रहा है। अब तक लगभग 20 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इसका सीधा मतलब है बिजली का बिल 0 और घर बैठे कमाई भी शुरू। महोदय, पिछले 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में 7200 किलोमीटर से भी, मैडम 2 मिनट, अधिक नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए हैं। मैं विपक्ष को याद दिलाना चाहता हूं कि वही शानदार सड़कें हैं जिन पर आराम से चलकर विपक्ष के नेता अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। जो आज विद्युत की जो वृद्धि की है, जो आज निर्माण किया 520.511 विद्युत का गीगावाट विद्युत की वर्तमान उत्पादन क्षमता है। 2014 से 296.388 गीगावाट नई उत्पादन विद्युत क्षमता हो गई है। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जो काम हुआ है वो अभूतपूर्व है। माओवादी और नक्सली आतंकी को चुनौती जो कभी इस देश में 126 जिलों में थी, आज मोदी सरकार ने सख्ती से सिमट कर मात्र 8 जिलों में रह गई है। 2 मिनट कंप्लीट करिए माननीय सदस्य। मुझे पूरा यकीन है जिस अभूतपूर्व रफ्तार और जिनके नेक इरादे के साथ हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर काम कर रही है, हम 2047 तक विकसित भारत के इस महान लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लेंगे। अंत में मैं अपनी बात एक प्रेरणादायक शायरी के साथ समाप्त करना நன்றி மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே. 2025-26 ஆண்டிற்கான இரண்டாம் கட்ட கூடுதல் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்திலே பங்கேற்க வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த கூடுதல் மானிய கோரிக்கையின் மூலம் ஒன்றிய அரசு கடந்த 2025-26 ஆண்டு நிதியாண்டிற்கான கூடுதல் செலவினத்திற்காக 2,81,289 கோடி ரூபாய் நிதியை கோரியுள்ளது. அதில் 80,145.71 கோடி ரூபாய் மட்டுமே ஒன்றிய அரசின் அமைச்சகங்களின் சேமிப்பு மற்றும் கூடுதல் வருவாய் மூலம் சரி செய்யப்படுகின்றது. அது அல்லாமல் 2,01,142.96 கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவினத்திற்காக ஒப்புதல் கோரப்பட்டிருக்கின்றது. 2 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் கூடுதல் செலவினம் என ஒன்றிய அரசு குறிப்பிட்டிருப்பது இந்த அரசின் நிதி திட்டமிடுதலின் தோல்வியை குறிப்பிடுகின்றது. ஒன்றிய அரசு ஒவ்வொரு நிதிநிலை அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும் போதும் நாட்டின் பொருளாதாரம் வலுவாக உள்ளது, வருவாய் அதிகரித்து உள்ளது, செலவினம் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது போன்ற ஒரு பிம்பத்தை மக்களிடம் காட்டுகின்றது. ஆனால் கிட்டத்தட்ட 2,81,000 கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவினம் என கூடுதல் மானிய கோரிக்கையிலே இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதான் இந்த அரசு முன்வைக்கக்கூடிய நிர்வாக திறனா? நிதி அமைச்சகத்தின் எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபண்டிற்கு 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் இன்டர் அக்கவுண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் மூலம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் பொருளாதாரம் வலுவாக இருக்கின்றது என்று இந்த அரசு கூறி வரக்கூடிய நிலையிலே 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபண்ட் எதற்காக மாற்றம் செய்யப்படுகின்றது? இந்த அரசின் நிர்வாக தோல்வி மற்றும் பொருளாதார தோல்வியை இது வெளிக்காட்டுகின்றது. இந்த கூடுதல் மானிய கோரிக்கையில் மாநிலங்களுக்கு நிதி என்று 30,116 கோடி ரூபாய் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எங்களுடைய தமிழ்நாடு குறிப்பாக தேசிய பொருளாதாரத்திலே மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அதிக வரி செலுத்தக்கூடிய மாநிலங்களே எங்கள் தமிழ்நாடு ஒன்று. அதிக தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கக்கூடிய மாநிலம் எங்களுடைய தமிழ்நாடு. எங்களுடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடர் முயற்சினால் பல்வேறு வெளிநாட்டு தொழில் முதலீடுகள் தமிழ்நாட்டிலே பெருகியுள்ளன.
அதிக தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கக்கூடிய மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழ்நாடு உயர்ந்திருக்கின்றது. ஆனால் ஒன்றிய அரசின் தமிழ்நாடு நிதி ஒதுக்கீட்டில் மட்டும் மிகப்பெரிய வஞ்சகத்தை தான் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றது. தற்போது தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நெருங்குகின்றது. தேர்தல் நெருங்கிவிட்டால் தொடர்ந்து பிரதமர், உள்துறை அமைச்சர் உள்ளிட்ட ஒன்றிய அமைச்சர்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு வருகை தந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும்தான் எங்கள் மாநிலம் உங்களுடைய கண்களுக்கு தெரியுமா? தேர்தலுக்கு முன்பும் பின்பும் ஏனோ எங்களுடைய மக்களுடைய கோரிக்கைகள், மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சி பணிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிவதே இல்லை. எங்களுடைய மாணவர்களுக்கான கல்வி நிதியை கூட உங்களுடைய கொள்கை திணிப்பை காரணம் காட்டி நிறுத்தி வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். ஆனால் உங்களுடைய இந்த வச்சக பார்வைக்கு பின்பும் எங்களுடைய தமிழ்நாடு கல்வியிலே முன்னேறி வருகிறது, முன்னிலை வகிக்கின்றது. தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சியிலே முன்னிலை வகிக்கின்றது, சுகாதார சேவைகளை முன்னிலை வகிக்கின்றது என்றால் அதற்கு எங்கள் தமிழ்நாட்டில் திராவிட மாடல் நல்லாட்சி தான் காரணம் என்பதை இங்கே பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். சமீபத்தில் வெளியான ஒன்றிய அரசினுடைய இந்த UPSC தேர்விலே தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியை பெற்றிருக்கின்றார்கள். நீங்கள் கல்விக்காக நிதியை ஒதுக்காத நிலையிலும் அகில இந்திய அளவில் 2ஆம் இடத்தை பெற்றுள்ள தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மாணவி ராஜேஸ்வரி மற்றும் 7ஆம் இடத்தை பெற்றுள்ள மாணவர் ராஜா மொய்தீன் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் UPSC தேர்விலே முதல் 10 இடங்களில் இடம்பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்க சாதனை. இந்த ஆண்டில் தமிழ்நாட்டிலே 60 பேர் UPSC தேர்விலே தேர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றார்கள். இதில் முக்கியமாக தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் பெரும்பாலான எங்களுடைய முதலமைச்சர் உருவாக்கிய நான் முதல்வன் திட்டத்திலே பயிற்சி பெற்றவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வாறு தமிழ்நாடு ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் வளமாக்கி கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் ஒன்றிய அரசு எங்களுடைய தமிழ்நாட்டை ரணமாக்கி கொண்டிருக்கின்றது. வரி வசூலிலே தமிழ்நாடு முன்னிலை, ஆனால் நிதி பகிர்விலே தமிழ்நாடு பின்னிலை. இது கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரானது. ஒன்றிய அரசின் நிதி அநீதி, இந்த பாஜக அரசின் தவறான கொள்கை முடிவுகள், தவறான நிதி முடிவுகள், தவறான திட்டமிடுதல் ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களும் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்று சர்வதேச சூழலின் பாதிப்பு சாமானிய வீட்டின் சமையலறை வரை சென்று விட்டது. பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் சிலிண்டர் உள்ளிட்ட எரிபொருளின் தட்டுப்பாட்டையும் விலை ஏற்றத்தையும் கட்டுப்படுத்துவதற்கு இந்த அரசு தவறிவிட்டது. இது சம்பந்தமாக அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி கூட ஆலோசிப்பதற்கு இந்த அரசு முன்வரவில்லை. நாம் யாரிடம் எதை வாங்க வேண்டும், எவ்வளவு வாங்க வேண்டும், எவ்வளவு காலத்திற்கு வாங்க வேண்டும் என்பதை கூட அமெரிக்க அதிபர் முடிவு செய்யக்கூடிய அவல நிலைக்கு இந்த அரசை பாஜக அரசு கொண்டு சென்று விட்டது. காலம் காலமாக நம்முடைய முன்னோர்கள் கட்டமைத்த நாட்டின் சர்வதேச கொள்கைக்கு பாஜக அரசு தொடர்ந்து பங்கமளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. உலக அரங்கில் தலை நிமிர்ந்து இருந்த நம் நாட்டினுடைய கண்ணியத்தை பாஜக அரசு தொடர்ந்து சிதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. உங்களுடைய கொள்கைகளையும் சித்தாந்தத்தையும் இந்த நாட்டினுடைய கொள்கைகளாகவும் நாட்டினுடைய சித்தாந்தமாகவும் மாற்றும் போக்கை பாஜக அரசு கைவிட வேண்டும். என்னுடைய ராமநாதபுரம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ராமநாதபுரம் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பெரும்பான்மையான கடலோர பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எங்களுடைய மீனவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். மீன்பிடி தொழில்களின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்திவிடும் தென்னை பனை சார்ந்த துணை தயாரிப்புகளை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே தொழிற்சாலைகளை ஒன்றிய அரசின் நிதியுதவியோடு உருவாக்க வேண்டும் என்று பலமுறை இந்த அவையிலே தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றேன். ஒன்றிய அரசினுடைய ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டிலே 2 மாவட்டங்களில் என்னுடைய ராமநாதபுரம் மாவட்டம், என்னுடைய திருச்சி தொகுதி அடக்கிய விருதுநகர் மாவட்டம் உண்டு. ஆனால் அந்த மாவட்டத்தை முன்னேற்றப்படுத்துவதற்கு ஒன்றிய அரசால் நிதி உதவியோடு பிரத்யேக வளர்ச்சி பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கேட்கின்றேன். அதற்கான வளர்ச்சி பணிக்கான முன்னெடுப்பில் ஒன்றிய அரசு ஈடுபட வேண்டும் என்று கேட்கின்றேன். விவசாயிகளுக்கான உரச்சிலைக்கு 19,830 கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவினம். விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகளுடைய முன்னேற்றம் குறித்து இந்த அரசு நிலையான கொள்கைகளை வகுக்க தவறிவிட்டது. விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குவோம் என்று 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம்முடைய பிரதமர் கூறினார். ஆனால் தற்போது வரை இரட்டிப்பாகல. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வருமானத்தை பாதுகாப்பது கூட நிலையான நடவடிக்கை இல்லாமல் இருக்கின்றது. விவசாயத்திற்கான செலவு அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது. உர விலையேற்றம் படிப்படியாக உயர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. விவசாய பொருட்களுடைய விலையை நிர்ணயம் செய்யப்படாமல் இருக்கின்றது. இவற்றையெல்லாம் கட்டுப்படுத்துவதற்கு தெளிவான நடவடிக்கை இல்லாமல் மானியங்கள் மூலமாக இதை சரி செய்ய முடியாது. இந்த கூடுதல் மானிய கோரிக்கையில் மாநில பேரிடர்களுக்கான நிதியாக 2,689 60 கோடி ரூபாய் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எங்களுடைய தமிழ்நாடு எதிர்கொண்ட புயல், வெள்ளம் போன்ற பேரிடர்களுக்கு நாங்கள் முன்வைத்த எந்த நிதியும் குறிப்பிட்ட கால வரையறைக்குள் இந்த ஒன்றிய அரசு விடுவித்ததே இல்லை. மோசமான பேரிடர்களை நாங்கள் எதிர்கொண்ட பேரிடர்களை விட மோசமான உங்களுடைய பேரிடர் அரசியல், அதனை இந்த அரசு கைவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். பாதுகாப்புத்துறைக்கு श्री राजकुमार चहार जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। महोदय, आपने आज मुझे 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अपनी बात रखने से पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय बहन श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के विकास के हित में इन मांगों को सदन में रखा। इसके साथ ही मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे जो साथी सांसद हैं उनमें अभी मैं सुन रहा था कि भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपने वक्तव्य में ये कहा कि हम सभी सदन में उपस्थित साथियों को देश के सामने अगर कोई चुनौतियां वैश्विक चुनौतियों के कारण से आई हैं, वैश्विक समस्याओं के कारण से आई हैं, तो उनको मिलकर हमको सामना करना चाहिए। और अभी उसी की एक झलक हमारी बहन यहाँ बैठी थी, अभी उन्होंने भी एक वक्तव्य दिया, सुप्रिया सुले जी ने। उन्होंने बहुत शांति से सरलता से बात को रखा। उनसे भी हमारे कांग्रेस के कुछ साथियों को और अन्य राजनीतिक दलों के विपक्षी दलों के साथियों को सीखना चाहिए कि वक्तव्य सदन में किस प्रकार से रखा जाता है। मैं देख रहा था कि अभी हमारी डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर जो बातचीत चल रही थी, सदन में जो चर्चा चल रही है, उसमें अनेक लोग कोई जाति जनगणना की बात कर रहा है, कोई अन्य प्रकार की बात कर रहा है। अब वो अलग बात है कि सदन में भी हमारे ऐसे कई साथी हैं, सरकार ने तो जाति जनगणना स्वीकार कर ली, होने वाली है, पूरे देश में चलेगी। कई साथी तो ऐसे हैं कि उनको जब जाति का पैराग्राफ आएगा तो उसको भरने में भी ये लगेगा कि भाई कौन सी जाति भरे। अब खैर वो जाने, उनका काम है कि क्या लिखेंगे उसमें। महोदय, किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक व्यवस्था की परिपक्वता इस बात से पहचानी जाती है कि वह बदलती परिस्थितियों में अपने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करती है। बजट केवल आय या व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह सरकार की प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशा का प्रतिबिंब भी होता है। आज हम वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा कर रहे हैं। यह प्रक्रिया हमारे संसदीय लोकतंत्र की पारदर्शिता को मजबूत करती है, क्योंकि सरकार अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की स्वीकृति लेती है और हर रुपए के उपयोग की प्रति जवाबदेही रहती है। महोदय, इस दूसरे बैच के माध्यम से सरकार ने लगभग 2.81 लाख करोड़ के अतिरिक्त व्यय की अनुमति मांगी है। इसमें से लगभग 2.01 लाख करोड़ का वास्तविक अतिरिक्त नगद व्यय है, जबकि शेष राशि विभिन्न विभागों की बचत और समायोजन से पूरी की जाएगी। यह तथ्य यह भी दर्शाता है कि सरकार केवल खर्च बढ़ाने के लिए खर्च नहीं करती, बल्कि संतुलित और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन के साथ विकास को गति दे रही है। वर्तमान में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच में अभी चर्चा चल रही थी कि भारत की स्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से गुजर रही है। ऊर्जा का संकट, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक मंदी की आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं। इन परिस्थितियों के बीच भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा है और विकास की गति को बनाए रखा है। यह स्थिति किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि यह नीतिगत स्पष्टता और मजबूत आर्थिक प्रबंधन जो मोदी सरकार ने दिया है, ये उसी का परिणाम है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में भरोसे का केंद्र बन चुकी है। विदेशी निवेश बढ़ रहा है, विनिर्माण का विस्तार हो रहा है और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि आज दुनिया में भारत को एक अवसर के रूप में, आज पूरी दुनिया भारत को एक अवसर के रूप में देख रही है और यह विश्वास हमारी आर्थिक नीतियों की सफलता का प्रमाण है। सभापति महोदय, जब सरकार आर्थिक नीतियां बनाती है तो उसका उद्देश्य केवल विकास दर बढ़ाना नहीं होता, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा देना भी उतना ही आवश्यक होता है। इसी सोच के साथ सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण के कार्यक्रमों को मजबूत किया है। आज देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन देने का काम सरकार निःशुल्क रूप से फ्री में कर रही है। कांग्रेस पार्टी के समय में गरीबों के निवाले को छीनने का काम होता था। आज सरकार, मोदी जी की सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को राशन देने का काम किया है। ये दुनिया का पहला अनुकरणीय उदाहरण है जो आज पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं कर पाया। अध्यक्ष महोदय,
अभी अनेक प्रकार की वैश्विक चुनौतियों के बारे में तो सरकार अपना लगातार बता ही रही है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि भारत में कोई पैनिक नहीं। आम जनता को विश्वास है केंद्र की सरकार पर, मोदी जी की सरकार पर, लेकिन किस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर दिए जा रहे हैं, लोगों को पैनिक किया जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के समय के चले आ रहे जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं, वो आज भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और उनका नेटवर्क उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज पूरे देश भर में एक अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जब किसी देश की नीतियां गरीब की थाली की चिंता करती हैं, तभी वह सच्चे अर्थों में कल्याणकारी राज्य बनता है। महोदय, कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र जो है वो भारत की आत्मा है। देश की बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। चूंकि मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं, तो मैं इन बातों के महत्व को समझता हूं। किन परिस्थितियों के अंतर्गत आज उनके परिस्थितियों के कारण जो हमारी रसायन उर्वरक हैं उनकी कीमतों में वृद्धि हुई, लेकिन भारत सरकार ने किसानों को इसको बचाने के लिए उर्वरक सब्सिडी के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि किसान की लागत नियंत्रित रहे, उत्पादन प्रभावित न हो और खाद्य सुरक्षा मजबूत बनी रहे। मैं कहना चाहता हूं कि जब किसान का खेत सुरक्षित होता है, तभी देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होती है। महोदया, किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की प्रगति मजबूत बुनियादी ढांचे पर निर्भर करती है। आज भारत में सड़क नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है और हवाई परिवहन का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इन परियोजनाओं का प्रभाव केवल निर्माण तक सीमित नहीं रहता, यह निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है। इसीलिए सरकार का यह निर्णय कि विकास परियोजनाओं को संसाधनों की कमी के कारण धीमा नहीं होने दिया जाएगा, अत्यंत सराहनीय है। महोदय, भारत की सांस्कृतिक विरासत हमारी पहचान की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे ऐतिहासिक शहर और स्मारक न केवल हमारे इतिहास के प्रतीक हैं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसी संदर्भ में मैं अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी और आगरा की ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आगरा और सीकरी में TTZ और NGT की बाध्यताएं हैं, जिसके कारण कारखाने और उद्योग लगाने में दिक्कतें आती हैं, वो नहीं लग पाते। आगरा और फतेहपुर सीकरी के जो ब्रज का एक बड़ा केंद्र है, जहां मथुरा भी है, अलीगढ़ भी है, हाथरस भी है, भरतपुर भी है, धौलपुर भी है, उसका उनके आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि आगरा, फतेहपुर सीकरी, बटेश्वर, भरतपुर, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, दाऊजी, इस पूरे क्षेत्र को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाए, जिससे देश और दुनिया के पर्यटकों का आवागमन और बढ़े और वो स्थानीय रूप से वहाँ पे रुक सकें। उसके लिए अनेक प्रकार के नए प्रयोग और आयोजन भी किए जाएं। आगरा और फतेहपुर सीकरी में हमारे यहाँ जो कारीगर हैं, स्थानीय कारीगर जो हस्तशिल्प उद्योग को पर्यटन से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं। आगरा और सीकरी के जो कारीगरों की कला है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकरी के जो कारीगर हैं, वहाँ से पूरी दुनिया में दरिया एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन उनको और आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से मैं ये सरकार से निवेदन भी करता हूँ कि TTZ और NGT के कारण जो बाध्यताएं लगी हुई हैं, उसके लिए एक विशेष पैकेज की तैयारी केंद्र की सरकार के द्वारा भी की जाए और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी केंद्र सरकार के द्वारा निर्देशित किया जाए कि विशेष परिस्थितियों के कारण TTZ और NGT की बाध्यताओं के कारण जो विकास का काम में रुकावट है, उसके लिए पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। IT का क्षेत्र, IT का हब आगरा को बनाया जाए और वहीं पर खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के अलावा वहाँ कोई दूसरा उद्योग और कारखाने नहीं लगाए जा सकते, उसके लिए भी बड़े अवसर प्रदान किए जाएं। उसी से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा और ये पूरा धौलपुर, भरतपुर की ये जो बेल्ट है, जो ब्रज कहलाता है, जिसमें भिंड भी आता है, मुरैना भी है,
धौलपुर भी आता है, तो वहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मुहैया हो पाएंगे। मैं यही कहते हुए कि महोदय, आज जो प्रस्तुत अनुपूरक मांगे यह स्पष्ट करती हैं कि सरकार विकास और सामाजिक सुरक्षा दोनों को समान महत्व देती है। इन प्रस्तावों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, किसानों को समर्थन मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मजबूत होंगे। इसलिए मैं सदन से आग्रह करता हूं कि वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को समर्थन प्रदान किया जाए। यही कहकर मैं अपनी बात को पूरी करता हूं और पुनः कहता हूं कि जो सुप्रिया सुले जी हमारी दीदी यहाँ बैठी हैं, उन्होंने जो सुझाव और जिस प्रकार की व्यवहारिक बातचीत उन्होंने की, शालीनता से बात रखी, कांग्रेस के साथी भी और अन्य दलों के लोग भी उनसे कुछ सीखें और उनका आचरण करें, जिससे सदन की मर्यादा भी रहे और देश की प्रगति भी आगे हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री एम के विष्णु प्रसाद जी। Thank you, Honorable Speaker, Chairperson, and my beloved leader, Shri Rahul ji, for giving me the opportunity to speak on demands for grants and appropriation bill. Appropriation is a legislative proposal which authorizes the government to take the funds from the treasury and to allot the funds for specific purpose in departments. Kindly excuse my voice, because for the past 2 days I have been shouting in the well to fight to regain our democracy. This you can forgive and I can forget. But one thing you should remember, on the streets, people voices are very, very bad. They are even more worse because they have been shouting for cylinders, for petrol, for diesel. They are crying on the roads of India. The people, the middle class people, the poor people are crying for petrol, diesel and gas, which is a fundamental for lively being. But that is being kept in shortage. That is under questionable because of a turbulence in West Asia. And this is the state of affairs Modi government is taking us through. This we should not forget or ignore. Number two, recently you have increased the price of LPG by ₹60 rupees. Directly आप भारत के महिलाओं का neck को crushing कर रहे हैं. You are crushing the neck of women of India directly. Moreover, in the West Asia there is a tension we all know, and United States has magnanimously, kind-heartedly, with a motherly hood, they have given a permission for us to take 1 month oil from Russia. Never in the history, India have been given dictation from even an enemy country or a neutral country, in spite of having a very, very intimate, close relationship between the two leaders. I don't know what happened, why India is put under this tight, shameless spot. When there was 30% reduction in oil prices and India was importing oil from Russia, US got very angry. As a result, 50% more tariff has been imposed. But unfortunately, the people of India, they suffered a lot, especially in the textile industry and the seafood export industry. It took a toll. Lot of laborers have to leave their place and go back to their native villages. Ironically, the person or the company who imported the oil at 30% lesser price from Russia, they benefited unimaginably by just refining it and exporting back abroad. Whereas Indian citizens did not even have a 10% reduction in the price of petrol or diesel. Are we not to be ashamed? And interestingly, in this budget, normally we all know about advance tax. We all know about advance tax. But there is something in this budget called advance punishment. A state like Tamil Nadu
Kerala, West Bengal, there was no allocation of funds, no schemes. And the people from all these states, they knew very well they are not going to support BJP. And for that, BJP is taking revenge on them. And that is why they are punishing the people of these states, 3 states. And you mark my words, in these 3 states, definitely you are going to lose in a very, very big manner, without any doubt. And there is no income tax relief for middle class people. Welfare schemes like Narega, PM Poshan, Jal Jeevan Mission, there is reduction in fund allocation. This budget is criticized for ignoring falling household savings and high inflation on essential services like education and healthcare. What makes Finance Minister's Nirmala Sitaraman's 9th budget distinctive is its refusal to choose between growth and discipline. Instead, it attempts the third path, sustain public investment backed by predictable fiscal behavior. This budget is guided by 3 kartavyas. Sustain economic growth to enhance productivity, competitiveness, and build resilience against volatile global dynamics. This is the first kartavya. Against volatile global dynamics. But what happened? In a week's war in West Asia, India is facing such an acute shortage of gas cylinders, and there are a lot of queues in kilometers in petrol bunks, and this is the immediate rapid reflection of this global dynamics. My major concern is there is a nominal weak GDP growth of which is 8%, markedly lower than the level seen in the past 2 decades. This budget lacks a clear roadmap for mass employment, as capital-intensive sectors like semiconductors and biopharma does not absorb a large semi-skilled workforce. And in Ministry of Fertilizer, the budget is 1.5 lakh crores. And the first batch and second batch supplementary, there was 38,000 crores demand. But urea production is reduced from 314 metric lakh tons to 307 metric lakh tons. It contradicts the statement that we will stop urea import by 2025. And in a recent day before yesterday, in a very, very famous newspaper in Delhi called Pioneer, there was an article saying that large defaulters leave PSU banks chasing 29 lakh crores. The first bank is Union Bank of India, 9.96 lakh crores. SBI stands second with 5.79 lakh crores, and third Punjab National Bank crores. In this, I want to name a few major defaulters. The first stands Anil Ambani, which is 48,000 crores, Vedanta Group, Adani Group, SR Group, GVK, Aban Holdings, and Videocon, etc. Now, our Prime Minister was very proud, ma'am, in saying that PSUs got immense profit this time, the last year, last financial year. But in my Kadalur constituency, there is an NLC, which was the CAG report says around 2,500 crores loss due to design flaws, and also there is lack of environmental clearance. This is not my report, this is the CAG report, ma'am. And in my constituency, I would like to thank our Railway Minister for allotting Vande Bharat from Chennai to Tirunelveli, but that has to be given from Chennai to Nagarkoil. There is another Vande Bharat that also to be given, and Tambaram Viduppuram to be extended to Virudhachalam. And finally, in Chennai Kadalur, new railway track to be started at the earliest. And there is an NLC airport which has to be restarted, and most importantly, multi-specialty hospital in Kadalur, sir. And to conclude, I would like to say, in the previous week, there was a commotion that some of the women MPs approached some chair. It is a concern. And our Honorable Speaker also said that it is not allowed and all those things to be cleared. But I want to know only one thing, sir. We have a CASF. We could have given extra protection to our Honorable Prime Minister. When our Parliament cannot save our Honorable Prime Minister's security, then how it will give security to Indian citizen? If enemy army comes near the border, will our government recall our BSF force from the border and ask them to come back? Obviously, they have to fight. But this statement is really to be reconsidered.
And I understand this government is not in a progressive mode. They are just wanted to just while away the time. They just wanted to pass the time. I understand there is no progress, there is no visionary, there is no stability in the economy. But still, you should also take care of the poor people, of the middle class people, safety of the women, and also create the employment generation. All these points to be considered before this demand for supplementary grants to be issued. Thank you very much, sir. माननीय सदस्यगण, कुछ महत्वपूर्ण नोटिस आए हैं, उस पर कुछ चर्चा विषय उठाने के लिए प्रतिपक्ष के नेता ने आग्रह किया है। मैं माननीय राहुल गांधी जी से Thank you, Speaker. Speaker, sir. As everybody is aware, a war has broken out in the Middle East. The United States, Israel, and Iran are at war. This war is going to have far-reaching consequences. The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed. And this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. माननीय सदस्य, आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो
नहीं इजाज़त दी जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। आप अगर नोटिस के अंदर, नोटिस जिस विषय पर आपने नोटिस दिया था, मैंने सुबह भी कहा कि संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है। आपने जो नोटिस दिया है, आप उस नोटिस में बोलिए। आपको अगर इस विषय पे बोलना है तो आप नोटिस देते, मैं अलाउ करता नहीं करता ये मैं तय करता, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। 9, आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, आप नहीं बोलना चाहते इस विषय, ठीक है। 9 हाँ, इस विषय पर, जिस विषय पे नोटिस दिया उस विषय पे नोटिस में बोलिए। अगर आपको इस डिटेल पे बोलना है तो उस पर नोटिस दीजिए आप। 9 धर्मेंद्र यादव जी, आप बोलना चाहते हैं? सभापति लीडर ऑपोजिशन को सर बोलने दीजिए, बात पूरी हो जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन पूरी बात हो जाए तो लीडर नियमों ऑपोजिशन से की सर। बोलेंगे, नियम के विपरीत नहीं बोल सकते। जिस विषय पे उन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस सदन के पटल पे है, उस विषय पर बोले हुए। सभापति जी लीडर ऑपोजिशन की बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ। सभापति जी बोलिए, माननीय रणदीप पुरी जी। Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. I rise to inform. Honorable Speaker, sir, I rise to inform the House of steps taken in response to the disruption of the global energy supplies arising from the ongoing conflict in West Asia. The world has not faced a moment like this in modern energy history. Today is the 13th day since the passage through the Strait of Hormuz, through which 20% of world's crude, 20% of world's natural gas, and 20% of the world's LPG flows was disrupted following the military operations between Iran, Israel, and the US. For the first time in recorded history, the Strait of Hormuz has been effectively closed to commercial shipping. Despite India having no role in causing the conflict, like many countries, India has to navigate through its consequences. The contrast with how other nations are managing this crisis places India's response in its sharpest relief. A country in our neighborhood has shut all schools for 2 weeks, moved government offices to 4-day work week, ordered 50% of public employees to work from home, cut fuel allowances for official vehicles by half, and taken 60% of government vehicles off the road. This country has experienced the largest single fuel price increase in its history, with petrol up approximately 20% in a week. In another neighbor, has closed universities early and brought forward the Eid al-Fitr holiday to save fuel. Countries in Southeast Asia have also had to take energy rationing and conservation measures. Honorable Speaker, sir, India's crude supply position is secure and volumes secured exceed what the Hormuz would have delivered. Before the crisis, approximately 45% of India's crude imports transited through the Hormuz route. Thanks to the Honorable Prime Minister's outstanding diplomatic outreach and goodwill, India has secured crude volumes that exceed what the disrupted Strait of Hormuz could have delivered in the same period. Non-Hormuz sourcing has risen to approximately 70% of crude imports, up from 55% before the conflict began. India sources crude from 40 countries as against 27 in 2006 and 7. This structural diversification, built through sustained policy over successive years, has given us options that other nations find themselves without. Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%.
There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. Additional allocation of PDS kerosene has been issued to all the states. Honorable Speaker, sir, natural gas supply has been managed through prioritized allocation and the position is stable, well beyond immediate need. India produces approximately 90 million metric standard cubic meters per day of natural gas domestically. A further 30 million metric standard cubic meters per day was previously imported through Gulf sources, now affected by the force majeure declaration of a major Qatari processing facility. The force majeure declaration, the Natural Gas Control Order issued on 9th March 2026 under the Essential Commodities Act established an immediate priority sequence. Domestic pipe gas goes to homes and CNG for vehicles receives 100% supply with no cuts. Industrial and manufacturing consumers will receive upon 80% of their previous 6 months average. Fertilizer plants will receive up to 70%, protecting the agricultural input chain ahead of the sowing season. Refineries and petrochemical units absorb a managed reduction with the House that the shortfall has been substantially upward through alternative procurement. Large LNG cargoes are arriving on an almost daily basis through alternative supply routes, and India has sufficient gas production and supply arrangements to sustain this position even in the event of a prolonged conflict. Power generation for every household and for industry is fully protected. Honorable Speaker, sir, it should be noted that India was previously importing approximately 60% of the LPG requirements from Gulf countries such as Qatar, UAE, Saudi Arabia and Kuwait, and 40% is produced domestically. Procurement has now been actively diversified, with cargoes being secured from the United States, Norway, Canada, Algeria and Russia, in addition to Gulf sources. The LPG control order issued on 8th March 2026 directed all refineries to maximize LPG yields and channel the entire output of C3 and C4 hydrocarbon streams comprising propane, butane, propylene and butene